Good morning, students. Today we are going to read chapter Gopal and the Hilsa Fish. This chapter is in the cartoon form. You might have read many comic books in your childhood and might be aware about a few cartoon characters also, like Chacha Chaudhary, Pinky, Sabu, etc. So, in this chapter, all the scenes are described in comic form. So, from the expressions of the people, you come to know what they are trying to say or what they are feeling. So, let us start reading of the chapter. It was the season for Hilsa fish. Fisher, Fishmen could think of nothing but Hilsa fish. As this was the season of Hilsa fish, so fishermen they only got Hilsa fish, not any other kind of fish. Fishmongers sold nothing but Hilsa fish. और जो फिश मॉन्गर्स थे फिश बेचने वाले थे वो भी कुछ नहीं बेचते थे सिवाय हिल्सा फिश के. Come by, the price of Hilsa is down today, and they lure their customers by saying that come and buy the Hilsa fish because its price is down today. Householders could talk of nothing but Hilsa fish. और जो घर में रहते थे लोग अपने घर का काम करते थे वो भी किसी और चीज़ के बारे में बात नहीं करते थे, वो भी किसके बारे में बात करते थे, हिल्सा फिश के बारे में. हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा. अब क्या कॉन्वर्सेशन का टॉपिक था, प्राइस ऑफ द हिल्सा फिश. एंड इन द पैलेस टू द कोर्टियर्स could डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश. और पैलेस में भी जो कोर्टियर्स थे वो किसी और चीज़ के बारे में डिस्कशन नहीं करते थे, दे ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द हिल्सा फिश. सो योर मेजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई caught. It was now one of the courtiers very happily says the king that he had caught a very huge hilsa fish, but the king there and then stops him and gets irritated. We can see from his expressions that he is angry. So he stops the courtier to talk about hilsa fish. आर यू अ कोटियर और अ फिशरमैन. और वो किंग उसको पूछता है कि तुम कोटियर हो कि कोई फिशरमैन हो. दैट इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग एनीथिंग अबाउट द कोर्ट यू आर डिस्कसिंग अबाउट हिल्सा फिश. द कोटियर फेल साइलेंट विद डाउनकास्ट आईज. जो कोटियर था वो अपनी नजरें नीचे झुका के चुप करके खड़ा हो गया. ही फेल साइलेंट विद डाउनकास्ट आईज. द किंग फेल्ट गिल्टी. उसको डांटने के बाद द किंग ऑल्सो फेल्ट bad that he has done something wrong. When he scolded the courtier, I'm sorry I lost my temper. And then the king feels sorry and he agrees that he got angry very quickly. It is the season for hilsa fish and no one, and the king says that हिल्सा फिश का सीजन है और कोई भी किसी और चीज़ के बारे में बात नहीं करता, बस हिल्सा फिश के बारे में बात करते हैं. Not even Gopal can stop anyone from talking about Hilsa fish, not even for 5 minutes. And the king says that Gopal is one of the wisest courtiers of king's court. And the king says that even that person cannot stop anyone from talking about Hilsa fish. Oh, I think I could, Your Majesty. But then Gopal says that he can stop people from talking about hilsa fish. Then let me see you buy a huge hilsa and bring it to the palace without anyone asking you a word about it. Then king says, okay, तो तुम ऐसा करो, एक बड़ी सी हिल्सा फिश खरीद के लाओ पैलेस में और पूरा रास्ता नो वन शुड टॉक अबाउट दैट हिल्सा फिश विद यू. तुम्हारे साथ उस फिश के बारे में कोई भी कुछ बात ना करे. आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मेजेस्टी. और फिर उसने बोला ठीक है, आई एक्सेप्ट योर चैलेंज. अ फ्यू डेज लेटर, a few days later मतलब कुछ दिनों के बाद, Gopal did not start thinking about started working on his plan immediately. He took a few days and then he worked on his plan. Why is your face half shaven? Wife is worried. You can see here that he has half shaven his face. तो wife is worried कि तुमने ये half shave क्यों की है. I am dressing up to buy a fish.
और वो कहता है कि मैं फिश को खरीदने की तैयारी कर रहा हूँ. What's the matter with you? Why are you smearing yourself with ashes? क्या हो गया है तुम्हें? तुम अपने फेस के ऊपर राख क्यों लगा रहे हो? I told you I am dressing up to buy a Hilsa fish. मैंने तुम्हें बताया तो है कि मैं एक हिल्सा फिश खरीदने के लिए रेडी हो रहा हूँ. Listen to me. Please, you can't possibly go out in those disgraceful rags. What are you up to? Now the wife tries to stop Gopal and she says कि disgraceful rags means ये फटे पुराने कपड़े. तुम इतने फटे पुराने कपड़ों में बाहर नहीं जा सकते. What are you up to? It means what are you planning to do? तुम्हारी इंटेंशन क्या है? तुम क्या प्लान कर रहे हो? How many times must I tell you? मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं women? I am out to buy a huge hilsa fish. मैं एक बहुत बड़ी हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ. What has happened to him? He has gone mad. पता नहीं इसे क्या हो गया है. He has gone mad means he has gone crazy. Now, this is the scene of the market where Gopal has bought Hilsa fish and he is on his way back to palace. Now, there are people, you from the faces, you can see their expressions when they see Gopal. And one of the child says, Mother, look at that man. Isn't he comical? उस मैन को देखो, क्या वो फनी नहीं लग रहा? He must be a madman. Another person says that मुझे लगता है कि वो पागल है. Shh, I think he's a mystic. चुप रहो, मुझे लगता है कि कोई मिस्टिक है, कोई साधु है, कोई होली मैन है. When Gopal reached the court, जब गोपाल कोर्ट पहुंचा, the soldiers even didn't recognize him. Soldiers ने उसको नहीं पहचाना. And they asked him, what do you want? क्या चाहिए तुम्हें? I want to see the king. Then Gopal says that he wants to meet the king. You can't see the king. Get away with you. तुम राजा को नहीं देख सकते. चले जाओ यहाँ से. Gopal began to dance and sing loudly. When the soldiers did not allow him to enter inside the palace, he started to dance and sing there. And then the king heard noise coming from outside. So he says, what is happening inside the palace? The king is inquiring, and a man says, the man is crazy. ये आदमी पागल है. Throw him out at once. इसे एक मिनट में बाहर निकाल दीजिए. I want to see the king. Let me in. And then Gopal says, मुझे king को मिलना है. मुझे अंदर जाने दो. Bring that man to me at once. उस आदमी को मेरे पास लेके आओ. Yes, your majesty. And the soldier agrees. Gopal was brought before the king. Gopal को king के सामने लाया गया. It is Gopal. One of the courtiers recognized him and he said that it is Gopal. The man has lost his mind. दूसरा कहता है मुझे लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है. I think it's one of his crazy jokes. मुझे लग एक और कोटियर कहता है मुझे लगता है कि ये तो कोई उसका बहुत ही क्रेजी जोक है, मजाक है उसका. All right, Gopal, out with it. Why are you dressed up in this ridiculous fashion? तो किंग कहता है ओके गोपाल बहुत हो गया, अब मुझे ये बताओ कि तुम इतने भद्दे कपड़ों में क्यों ड्रेस्ड अप हो. रिडिकुलस फैशन मीन्स इतने यहाँ पे इतने भद्दे कपड़े आएगा, इसका मीनिंग. योर मेजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग. अब गोपाल कहता है किंग मुझे लगता है कि आप कुछ भूल रहे हैं. फॉरगॉटन समथिंग, कुछ भूल रहा हूँ. Strangely enough, no one seems to be interested in Hilsa fish today. आज कोई भी इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था मुझे हिल्सा फिश में. From the market to the palace and in the court, not a soul has spoken a word about Hilsa fish. मार्केट से लेके पैलेस तक, रास्ते में और अब यहाँ कोर्ट में भी मेरे से किसी, नॉट अ सोल मीन्स एक सिंगल पर्सन ने भी मुझसे हिल्सा फिश के बारे में कोई बात नहीं की है. Only then did the king remember the challenge he had thrown to Gopal. और तभी किंग को याद आया कि उसने गोपाल को एक चैलेंज दिया था. हा हा, वेल गोपाल, congratulations, you have achieved the impossible once again. And then he congratulates Gopal and says that once again he has been successful in achieving the impossible task. So I hope the chapter is clear to you all.